Hi everyone, good morning. I hope I'm audible. Hi all, good morning. I hope I'm audible. I hope I'm visible. Yes, there was some issue with the starting of it. I hope if you are restarting it, restart करेंगे तो काम बन जाएगा. So please restart, everyone. Please restart, relog in, and this will happen. So we are here for the last session. Biosphere, polar and aquatic biomes. We were left with this. So we have, in a way, looked at the lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and biosphere. This is physical geography, principles of physical geography. What about human geography, sir? So human geography will be taught and included in world geography classes. It will be part of the world geography classes. So if soil fertility is low in equatorial region, then how come there are dense forests? Okay, Ayush, good question. Ayush has a question. If the soil fertility is low, then how come there are forests? Perfectly okay. Delhi's temperature is 33. Tamanna, मेरे ख्याल से temperature और नीचे जाएगा. The way it is cloudy and everyone as North India will get heated up, it will attract, it will become low pressure, it will attract water from surroundings, and since there are still western disturbance, some moisture in the air, it will come back. तो ये charts चलते रहेंगे. Prayagraj is 37-20. I can understand. Central and eastern plains are getting warmer. Perfectly okay. Mansoor 34-20. Sir, I don't know why I was blocked to comment. I do not know. Perfect. So thank you for the weather report. So everyone, my question to all of you is that even after the class is over, as I say, officially physical geography course today is the last class, and I've told you that I will be bringing PYQ classes. They will not be 2 hour long. They will be shorter classes. We will be doing PYQs, prelims as well as mains. So this is the last class, and this is where we finish the biosphere. Is everyone okay? And I have a request. अपनी weather report जारी रखिएगा. These are amazing changing times of weather. You will understand the weather phenomena more. Somebody says happy Hanuman Jayanti, so happy Hanuman Jayanti to you and everybody in the class. India is always a festival. That's the beauty called India. Akbarpur 37-21. बिल्कुल अपने आसपास की air quality, and also keep in mind, because your environment teacher will be bringing a lot of environmental concepts in that. So अपनी air quality, pollution, relate to it. Use the advantage that geography has given you that. Yes or no? Perfectly okay. Is everyone okay? Chaliye, let us come to the point. Let us straight away get to questions, relevant questions. The 2 questions which have been asked. 2 questions have been asked. One is, what is laterization? What is laterization? Second is equatorial region soils are not fertile. Soils are not fertile. How come? Dense forest. Genuine questions. So I would really like to help you with that. So how to take optional? We will look at that. I will take a special session on choosing optional. So don't worry on that. Is everyone okay? उस पर हो जाएगा, and then you choose whichever optional you want. I don't want just एक class देखकर or some subject. We will look at your temperament and then you decide. There is a method to that. ठीक है. उसके बाद क्या है? उसके बाद that's it. So weather reports, keep them handy. So number one. Iron, aluminium, iron, aluminium. Quickly keep drawing this. बच्चों. Keep drawing this. Silica, oxygen, calcium, sodium, potassium, magnesium. Mid region, salts get dissolved, they come down, and in hot regions, because of heat plus humid, heat causes silica also to move down. Okay, this is one. This is another one where hot and arid conditions are there. Here what is happening? Evaporation is happening. Because of that the water which is there in the soil is pulled up through capillary action. ये पानी ऊपर आ रहा है through capillary action. And what is it bringing along with itself? It is bringing salts on the surface, sodium, potassium, calcium, magnesium mostly. Everyone, please tell me what is process A, process B. जल्दी से बताइए. What is the name of process A and process B? Quickly. Mr. Pratap, that will be put on the KGS site. There will be question banks which will be put. Is everyone okay? What is A? What is B? Very good. A is leaching, happens in humid areas. B is calcification happens in arid areas. Another name for this
Another name for this is laterization. Laterization. Do we get that? Word laterization comes from laterite. Laterite which is used to form bricks. ईंट के लिए होता है. ईंट के लिए laterite. ईंटें बनती हैं soil से. This soil is good for making bricks. Why? Sir ऐसा क्या है? Tell me, when everything is gone down, what is remaining on the surface? क्या रह गया surface पर? Surface पे metal रह गए कि नहीं रह गए? Are metals left on surface? So this is soil rich in aluminium and iron. Aluminium and iron. What happened to other things? The salinization, calcification, same I told you yesterday. Calcification is the name of the process. कल भी बताया था. Alkalization भी बताया था जिसमें सोडियम आते हैं. कल की क्लास देख लीजिए प्लीज. So everyone, do we understand? बाकी सब क्या हो गया? नीचे चला गया. Everything went down. Everything went down with the water. Even silica went down. Only in the hot condition silica goes down. So silica goes down. Now what is left? Soil is rich in aluminium and iron. Aluminium and iron. Now tell me, you are making bricks. ईंट बनानी है और उस मिट्टी में the mud that you're going to use is having metal. The strength of metal also. अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? It is good. So it is good for brick making, but is it good for agriculture? Poor for agriculture. Laterization is poor for agriculture. Why? Because important bases went down, bases are gone, bases चले गए, and the soil has become what? Acidic. Soil has become acidic. From the soil lecture, is everyone okay with this? Is everyone okay? Everyone with me on this? Are we there? That's laterization. Did we understand? This soil has a very special name. This soil has a very special name. And the name of the soil is equal to soil rich in aluminium and iron is called pedalfur. याद रहेगा? Pedalfur. Ped is for soil. Soil rich in aluminium and iron is called pedalfur. ये भी question आता है. Surajit says today is my first class and today is the last class of the course. Surajit, I would strongly recommend please start from the beginning. Do not watch this from here. This is a high level class. Is everyone okay? So which regions in the world can I expect pedalfur? Which regions in the world can I expect pedalfur? Everyone? The process of leaching of silica is called laterization. No, all these things going down and only aluminium and iron left on top is called laterization. Leaching of silica is called desilication. वो भी अलग नाम है. Do not trap me into optional. Do not make this class go into optional. I want to keep it GS. Is everyone okay? So hot and humid region, what will happen? Leaching will happen. Things will go down, down, down. What will be left on top? Aluminium and iron. This going down is called leaching also. Another technical name for that is laterization. Laterization. And in this what happens? Even silica goes down when it is hot. So during hot times that process is called desilication. If I add so many processes, आप confused हो जाएंगे. Soil जो बचा ऊपर वो क्या है? Pedalfur. Soil rich in aluminium and iron. That is not good for agriculture because crops require what? These bases they require. They are तो lost. And soil भी hard हो गया. This soil is good for mining. This soil is good for mining. इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा बॉक्साइट. एल्यूमिनियम की खदानें ये बनती हैं. एल्यूमिनियम निकलेगा इससे, आयरन निकलेगा. एंड इफ देयर इज नॉट मच अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, उसी मिट्टी से ईंट बनाइए, मजबूत ईंट बनेगी. एवरीवन ओके? यू कैन यूज इट फॉर मेकिंग ब्रिक्स आल्सो. दैट इज व्हाट इज लैटराइजेशन. नाउ कम्स दैट इक्वेटोरियल रीजन सॉइल्स आर नॉट फर्टाइल. Equatorial region soils are not fertile. Why? Why? Sir, because of this process of leaching. Leaching, okay, perfect. Leaching. But the only thing that is there in this equatorial region is only thing that can survive here is forest. Because tree roots will hold on to minerals. Why forest? Because it has the best things. It has heat plus humidity. The only problem is what? Forests require what? Forests require heat and humidity, yes or no? Forests require heat and humidity. Forests require heat and humidity. True? That is there. Lot of it is there. The only problem is the nutrients. So as long as trees are there, वो पकड़ के रखते हैं. But once you chop off these trees, somebody said, sir, how can there be dense forest? I am with you 100%. Your doubt is very genuine. If you remove it once, you cannot get the dense forest again. You get that? The second time when it will come, the second time when it comes, that will happen. The second time when it comes, what will happen? That vegetation will not be very dense. Because by that time loss has happened. So we always talk about shifting cultivation should not happen. Shifting cultivation should not happen. Is everyone okay? Ayushi says, how ocean salinity affect ocean temperature? How ocean salinity affect ocean temperature? So again, I want to tell you that this is some chemistry. Adding solute to a solvent, adding salt to water changes many things too. Okay, that it changes the boiling point of water.
students who have done science in class 11th, you remember the concept of elevation of boiling point. So the boiling point of salt water is higher. Similarly, freezing point, people who have done science in 11th and 12th, you remember the concept of depression of freezing point. So salinity can change the evaporation process, can change the freezing process, when to freeze, when not to freeze. That is chemistry. आप चलते फिरते ये कर लेंगे तो गड़बड़ है. Somebody saying it also changes density. But it also changes density. It also changes density. But question क्या पूछा इन्होंने? The question is very specific. Question was how salinity affect the temperature. I want to tell you, since the boiling point is elevated in industrial regions, we make salt ponds. इनको heat sink कहा जाता है. More salinity will absorb more heat. More salinity absorbs more heat. इंडस्ट्री में बहुत जगह पर जहाँ पर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इज देयर एंड मोर हीट इज कमिंग, तो वी क्रिएट हीट पॉइंट्स, उसमें सॉल्ट डाला जाता है. आई ऑल्सो वांट टू टेल यू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. आप कभी कुल्फी खाएंगे, यू हैड कुल्फी, दैट आइसक्रीम विच दे फ्रीज मैरिज फंक्शंस एंड ऑल दैट, यू विल फाइंड दैट कुल्फी थोड़ा सा नमक आता है. द आइस दैट इज देयर ऑन द आइसक्रीम वाले की वेंडर के ठेले में जो होता है आइस, उसमें वो नमक डालता है, बिकॉज आइस ब्रिंग्स डाउन द फ्रीजिंग पॉइंट. इट इज बिकॉज ऑफ आइस, इट इज बिकॉज ऑफ सॉल्ट, इट इज बिकॉज ऑफ सॉल्ट द एंटायर ओशन डज नॉट फ्रीज, only the surface freeze. All this we teach in geography, optional. So salinity will decide the temperature and will ensure, because of water is salty, the entire ocean will not get frozen, will not go below zero. Ice itself is an insulator. So many concepts are there, cannot go into that. फिर बात वही है कि थोड़ा सोचेंगे तब होगा. Sir, why do metals not go down? Now this is where we refuse to apply any common sense. Everyone, why is calcium, sodium, potassium, magnesium going down? Why is calcium, sodium, potassium, magnesium going down? Because it is soluble in water. Who is taking things down? Water is taking things down. Yes or no? So water dissolves calcium, sodium, potassium, magnesium, it goes down. During hot conditions, even silica can move a bit. Now you tell me, in your life, as you have grown, does iron dissolve in water? Does copper dissolve in water? Do metals dissolve in water? No. आप ग्लास में पानी पीते हैं, सॉल्ट वाटर इज देयर बट द ग्लास डज नॉट गेट डिसॉल्व्ड. तो अगर माइंड नहीं अप्लाई करेंगे, सर मेटल क्यों नहीं जा रहा है? मेटल को ना श्राप मिला है कि तुम यहां से नहीं हिलोगे. ऐसी बात करते हो यार. तो इतना क्लास पढ़ाने के बाद भी, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड अ राइट ब्रेन एस्पेक्ट दैट यू हैव टू अप्लाई समथिंग, देन दैट इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन. ठीक है, सैफ मौर्य, 5 बार क्वेश्चन पूछने से कुछ नहीं होता है. आज क्वेश्चंस ले लिए कुछ क्वेश्चंस, बट अगेन सेइंग टेस्ट में करेंगे. एंड वंस अगेन आई वुड से कि थिंक अबाउट इट. एक ने लिखा रस्टिंग, तो मैं बता दूं रस्टिंग इज, कुछ लोग यहाँ पे साइंस दिखाते हैं तो मुझे भी पता देना चाहिए बाकी लोगों को साइंस इनकी कितनी है. वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन. Rusting is not solution. Teaching you chemistry. Rusting is oxidation. Rusting is a chemical reaction. Where iron and oxygen combine to form ferrous oxide. So lateritic soil are generally red in color. Why red in color? Because oxidation happens. It has got nothing to do with dissolution. But still किसी ने कहा कि मैं सबको बता दूं, मुझे rusting पता है, तो मैंने कहा मैं भी बता दूं, मुझे भी पता है. So please tell the last of the class how to revise physical geography. So everyone, I have a request. Since this was your first exposure to physical geography, many of you would not have read NCERT class 11th, or you have read it once only. So revision का सिर्फ एक तरीका, only one way. Read NCERT class 11 part 1 again. And when you are reading that topic, for that particular topic, revisit the video. Only that topic, पूरा video मत देखिए, only that topic where you are stuck. If you are able to understand evaporation, why watch that topic again? If you are able to understand condensation and cloud formation, that there are 3 levels of cloud, low, middle and high cloud, because right brain teaching is most of the things you understand. अब आपको ये lateralization समझ में आ गया. Why should you watch this video again? So do not watch. But where you feel that I have some confusions, do that. So what will be there? So first approach is NCERT should be completed at least 2 times, at least preferably 3, but वो 3 को हम बाद में छोड़ सकते हैं. लास्ट में रिवीजन का when we are close to the examination we can do it again. But with the class once, immediately after the class second time. So 2 times NCERT. Is everyone okay? Next is your PYQs. Next is your PYQ round and answer writing round. I will be coming there. Get that? So we have read our NCERTs. Wherever doubt, we watch the video. First level of attack, second level of attack, PYQs and the discussion on answer writing also. Third level of attack is there will be set of practice questions which will be uploaded on KGS website. वो कर लीजिए. That is enough. This is what it is there. I also want to tell you everyone that physical geography is principles. I as a teacher, am not very worried because my students will be coming again to me for world geography. So in world geography, I will apply these principles one by one. So there also, if any conceptual error on your side is coming, because I said something, you interpreted something else, which is very much possible. Some of you just think unidimensionally, you are not able to see multi-dimensions. But when we apply it on the world, that will also come. So I'm pretty assured that my students will get adequate exposure in geography, so much so that they will not only like geography, they will master geography. Geography ke sare questions, all questions you will be able to answer. Get that? Do we need any extra book from this? No. For general geography, no. Class 11th NCERT, classes, PYQ discussion, and your question banks that we will be giving. Is everyone okay? Okay, so that is there. So please take PYQ topic wise. I will decide. Don't worry. I will be doing that. The leaching and lateralization topic not given in NCERT. Don't worry. So I have explained that. मेरा काम है ना, मैंने तो I am asking you to limit to NCERT. Am I limiting to NCERT? I deliberately did not write the process desilication over there because I believe you optional के लिए है. So trust me on that. Is everyone okay? Somebody saying नहीं पता तो chemistry पढ़ लो, यहाँ क्लास में मत करो.
The idea is that we don't need that chemistry. We don't need that chemistry. So somebody asks, sir, what is the relation? I'm saying if you want to go deeper into the relation, you'll have to go into the chemistry of it. I simply gave you two simple things. It can change the boiling point. It can change the freezing point. Boiling point is a temperature. Freezing point is a temperature. What can salinity do? It can change the temperature. It can change the heat retention of water. Specific answer, you don't have to read chemistry. कोई chemistry पढ़ने की जरूरत नहीं. Your question was very specific. How does salinity impact temperature? I said the critical points like freezing point, boiling point of the water will change. Evaporation of the water will change because of salt. One. Second is heat retention of water will change. That's all. Okay. So please do not worry. Stick to your GS knowledge. So please tell us the book of world geography because I don't have to buy. So everyone world geography के लिए जब आएंगे तब हम बात कर लेंगे. If you have time, 6th 7th old NCERT. Old NCERT 6th 7th. Or if you are an ICSC board student, 6th 7th geography of ICSC. Did I make my answer very clear? Sir, is UPSC changes? तो ये राहुल है, राहुल ऐसे सवाल पूछते हैं. राहुल कल भी मैंने आप लोगों को नोट किया है. I'm taking the notes कि कौन कौन है यहाँ पर. But फिर भी there will be many people जिनको यही दिखाई देगा तैयारी नहीं करेंगे. So they have heard and videos are made viral. UPSC is planning to bring changes. So I want to tell you in 2010, UPSC talked about changes and they were thinking of removing optional. When? 2010. Where am I? 2023. It has been 13 years. It has not happened. Get that? So now I know what kind of questions Rahul has been asking and I have had enough of these distractive questions. But yes, I thought that there will be many students who will read these things which are made viral. This will happen, that will happen. So when this thing came in 2010 that UPSC is contemplating and UPSC has been changing syllabus, ye baatein, committee recommendations have been there. So many people made some smart choices. Even if GS is there, what are GS subjects? Geography is a GS subject, polity is a GS subject, history is a GS subject, economics is a GS subject. So many people decided to keep their optionals close to them. So many things happen that way also. So it's absolutely okay. If a change comes, first of all, we do not know when will it come. No point, right now losing hope or, becoming lost in our directions. Because there is a rumor that UPSC will change. मैंने बताया अभी आपके सामने rumor बता रहा हूँ. Rumor, it has been 13 years. We have been looking at it. So, ऐसा कुछ नहीं. और उसके बाद क्या है, कुछ चीजें वो ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं, but there are certain things which are there to stay and they will be there. So that is what I would say. And Rahul, academic चीजों पर फोकस करिए. बाकी लास्ट क्लास आपने पूरे बैच में किया नहीं तो ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ. So would you suggest any strategy who had just started the classes? Nidhi Patel, the whole classes are about strategy. आप प्लीज पहली क्लास से शुरू करें. I think आपने कल भी पूछा था ये. You said I'm starting and I do not know why you are sticking to it कि मुझे यहीं से करना है. पीछे जाइए क्लास कर लीजिए and do not go for binge watching. Do not watch like episodes of क्या है फर्जी. There are assignments given. Please do that. There is a very simple way. There are no shortcuts to success. And the classes have been designed in a way कि आपका एक level improve होगा. आप कल भी आए थे, मैंने कल भी पढ़ा था, लेकिन अब ये आखिरी क्लास है इसलिए I have been telling this. ठीक है. बायोम का टॉपिक मैंने पढ़ा है. somebody saying कहां से पढ़े? मैंने पढ़ा दिया है. एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. एनसीईआरटी की बायोलॉजी की क्लासेस में दिया होता है और आपके एनवायरमेंट के टीचर, योर एनवायरमेंट टीचर विल आल्सो टॉक अबाउट दैट. So will you provide any PDF format? Yes, we will be providing you. We have given you something on lithosphere. Please trust me. All those things will come, and that is why I am giving this gap between classes so that I can make that PDF available. So Shabnam, thank you, and your question was very valid. You will definitely get that. So when optional class will start? When I choose to take optional online, abhi I am not very inspired. Abhi I am not very inspired by the kind of things that happen on online. ठीक है. सर एसिड बेस थोड़ा बता दो. दिलीप कुमार इज अनदर कैंडिडेट. कल भी दिलीप ऐसे क्वेश्चन पूछे थे. दिलीप कुमार प्लीज, मैंने पहले बता दिया, उसको रिपीट कर लीजिए. कैन आई टेक हिंदी? सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल. सर इज तमिलनाडु बुक्स नीडेड फॉर ज्योग्राफी? नो, फॉर ज्योग्राफी यू डोंट नीड इट. Rimpi Shah says class 7th ICSC I have read. Okay, there is world geography in that. Absolutely okay. We just need concept. After that all we can crack my exam. So बच्चों मैं बताना चाहता हूँ very clearly, and everyone I know you are waiting for the class, but I think this is the last class. This is the last class. So I would want to bring something. Do we need memory in this exam preparation? Do we need memorization in this exam preparation? रट्टा लगाना है कि नहीं लगाना है? Yes or no? Memorization. Do we need that or not? Yes or no? So we need memorization. Do we need concept building or not? Do we need concept building or not? Yes. Do we need linking of content and concept? Do we need that? And do we need processing ability? Our brain work in order to identify correct statement, create a good answer. This is for prelims. This is for mains and interview.
इज एवरीवन ओके? आर यू विद मी? प्रोसेसिंग एबिलिटी क्या है? ये देखो, अभी ऐसा पूछेगा प्रोसेसिंग एबिलिटी, अभी प्रोसेस भी तो करेगा जब स्टेटमेंट वहां पर आएगी, क्वेश्चन समझना है प्रीलिम्स में। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ लेफ्ट ब्रेन पीपल आर? वो इसमें भी डाउट पूछ रहा है कि सर मेमोराइजेशन के नोट्स बनवा दीजिए, मेरे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बता दीजिए। एक बता रहा है सर यूपीपीसीएस में ऑप्शनल गया, तब से बता रहा हूँ, 13 साल से वेट कर रहे हैं, 13 साल से, बट इस बेचारे को यही पता है। तो जितने भी चंपक हो, अब छोड़ दो चंपक यार, कहना प्रोसेसिंग एबिलिटी क्या है, लिख दिया माइंड में। विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, एंड सेकंड इज विल यू बी एबल टू राइट अ गुड आंसर जिसमें मार्क्स मिले, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब हाउ कॉन्फिडेंट अ टीचर वुड बी देयर टू टेक ऑप्शनल आप लोगों के साथ जब आप ऐसी ऐसी बात करते। आई थिंक अब तक तो आपको पता चल गया होगा चंपक और नंदन कितने बैठे हैं यहाँ पर। ये सुनो, इनको सिर्फ एक ही है भाई हाथ जोड़ा, आप पुरुष नहीं महापुरुष हो, आप महान हो। अब सारे बैच को पता है, अब सारे बैच को पता है, तो भाई दिखा दिया आपने, चमका डाला। नाउ आई वांट टू कम टू द प्रोपोर्शंस। यस, मेमोराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन because this gives us content fragments, थोड़े थोड़े कंटेंट के टुकड़े मिल गए, some data। ये सुनो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज 20% to 30%, एंड दिस थिंग बच्चों इज अराउंड, कितना बचा है? अगर मैं इसको 45 मान लूं ऑन द हायर साइड, 55, get that? Is everyone okay? I do not know, अभी यादव क्या कह रहे हो? अभी यादव मैं तो लेसन ही दे रहा हूँ, okay? और रही बात डोंट मेक फन ऑफ एनीवन, भाई मैंने तो कोई नाम लिया नहीं, आप ही जानते हैं, ठीक है? कह रहा गिव लेसन, ये लेसन है, दिस इज लेसन, दिस इज इंपॉर्टेंट लेसन, दिस इज द लास्ट क्लास, आई एम जस्ट टेलिंग स्टूडेंट्स अबाउट दैट, है ना? ये लेफ्ट ब्रेन है, जिसको क्या चाहिए, प्रोसेसिंग का मतलब बता दो, ये वो करेगा। कोई बात नहीं, लिस्ट में नाम खुद ही डाल लो, कुछ को ना ऐसा फील हो रहा है मेरा नाम नहीं आ रहा, डाल, कोई टेंशन नहीं। इज एवरीवन ओके? एवरीवन विद मी? somebody says sir natural vegetation depends on local weather to some extent, everyone, did I not say vegetation is connected to formula? बताया, did I tell you the formula of vegetation? yes or no? It is connected to it, do we get that? So is everyone memorization important? Very important, very important, no doubt about that. Concept building important? Yes. Concept clarity, so one is very simple thing, one is I remember that there are pampas in Argentina, I remember pampas are in Argentina, and I remember llanos are in Venezuela. द कॉन्सेप्ट इज, एग्जांपल दे रहा हूं, द कॉन्सेप्ट इज, जो एक बोला लेसन 2 लिख ले भाई, आप ले, आज तेरा 100 ग्राम की नींद आनी चाहिए, लास्ट दिन है भाई, लास्ट दिन में पता तो चले ये भी थे, ये बेचारे बोल नहीं पाए, अभिव्यक्ति नहीं थी, आज फुल अभिव्यक्ति है, फुल ऑन प्रजातंत्र, आज ही छाप दो, जो बेचारे निकलना चाहते हैं कि अरे मैं नहीं बोल पाया, बिल्कुल बोलो। पैम्पास अर्जेंटीना, पैम्पास और अर्जेंटीना ये रट लेते हैं बच्चे, लाइन लगा के पैम्पास अर्जेंटीना लानो, लेकिन ये क्या है? दिस इज द टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, एंड दिस इज द ट्रॉपिकल। सर ये तो मुझे पता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक गर्म होता है एक ठंडा होता है, क्या गर्म और क्या ठंडा? उसकी घास गर्म होती है क्या गर्म क्या ठंडा? The temperate and tropical are two different properties. What happens here and why it happens, that was the formula which we had talked about, does depend on climate. ये concept हो गया। उसके बाद क्या देखा, कल हमने PYQ में देखा था, how beautifully they had worded equatorial forest वाला, equatorial forest PYQ, equatorial rainforest PYQ, that was content linking it, and once we identified it, then we started getting this. Is everyone okay? अभी आंसर राइटिंग तो शुरू ही नहीं किया, अब बताओ कैसे कर लें ऐसे लोगों के साथ आंसर राइटिंग, जो ये क्या करवा रहे हो, तो वो कुछ कर नहीं सकते। Yesterday I watched session with Anushka ma'am and Aishwarya sir. I learned a lot of things. Everyone, he's talking about Aishwarya Verma, who was rank 4, and the girl was not Anushka. ठीक है, उनका नाम क्या है मैम का नाम देख लीजिएगा, her name is अंजलि श्रोत्रिया, ठीक है, अंजलि है, अनुष्का नहीं है, एंड यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे सचिन अरोड़ा ऐश्वर्या, you'll reach that channel and you'll get that, ठीक है। करंट अफेयर्स रिलेटेड ज्योग्राफी, वैलिड क्वेश्चन। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज द कॉन्सेप्चुअल पार्ट, यहाँ पर योर टीचर्स एट KGS we ourselves will be bringing करंट थिंग्स ऑल्सो, और उनको हम ही आप लोगों को लिंक भी करना सिखाएंगे, तो डू नॉट वरी ऑन दैट, दैट विल ऑल्सो कम। इज एवरीवन ओके? चलिए तो वापस चलते हैं। आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस एंड आई हैव डेलिबरेटली टेकन द क्वेश्चंस, व्हाई? बिकॉज दिस इज द लास्ट क्लास, आई थॉट आई शुड गिव यू द स्ट्रेटजी, सो दैट इज दैट। इज एवरीवन ओके? तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड की बात किया था, ग्रासलैंड रह गया था, तो ग्रासलैंड कौन से एरिया से? इफ फ्रॉम द फॉर्मूला व्हाट इज इट? यस, फ्रॉम द फॉर्मूला व्हाट इज इट? नाउ ऑल द क्वेश्चंस बेटा, all other questions we will take in some special session, not here. Grasslands are in hot region plus semi-arid. Whenever semi-arid is there, you can keep jotting also, whenever semi-arid is there, trees cannot survive because trees require a minimum amount of water. Do we get that? So grasses will come. What will happen to the trees? Everyone please pay attention. What will happen to the trees is, the trees which normally used to be very, very tall in equatorial rainforest, these trees will become small.
Okay, two qualities of equatorial rainforest or other forest was that trees were very close to each other, trees were very very close to each other, and second part was trees were very tall. So now because water is not there, first of all, tree should not be there, but thoda bahut water hai because we are in the tropical area, hot area. In hot area evaporation happens, some water is there, so what will happen is the tree's height will reduce. tree बेचारा छोटा हो जाएगा, उसके पास उतना पानी नहीं है, खाना पीना नहीं मिलेगा तो कमजोर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, and they will not be very close together, so forest no longer the density is there. And what will replace the trees, everyone? What will replace the trees? Grasses will replace the tree. So this area will look like, is everyone okay? So how does a grassland look like? The grassland looks like this. So how is it different from a forest? Well, this is how a forest would look. A forest do you get that? This is forest. Which forest? Tropical forest. What is this? Tropical grassland. Everyone with me? Okay. So there is grasses, there are grasses and few scattered trees. Now tell me, I do not know, Delhi में बहुत सारे पार्क हैं, community park, people go over there, उधर बहुत घास होती है, there is a lot of grass and some trees have been planted. How many of you have seen such parks in your locality? आपने आसपास शहरों में ऐसे पार्क देखे हैं? पार्क होता है कि there is a lot of grass और कुछ कुछ पेड़ होते हैं, they are not dense like forest. How many of you have seen that? होता है, शहरों में होता है ऐसा या नहीं होता है? Delhi has it. तो आप जाएंगे, बहुत सुंदर से पार्क होंगे, अच्छी घास होगी and there will be some trees. लोधी गार्डन बिल्कुल है, मुगलों ने भी बनाए थे, बाग बनाए थे, तो लोधी गार्डन इज देयर, यू हैव सीन. तो सच ग्रासलैंड्स, इनके लिए एक नाम दिया गया, पार्क लैंडस्केप. Which grassland is known to have park landscape? Tropical grasslands. What are these? Tropical grasslands. Tropical grasslands. Now this is where concept comes. People have mugged up. Park landscape grassland is in this country. Every country where tropical grasslands are there, wherever tropical grasslands are there, वो होंगे. सर आगरा में भी है, बनारस में भी है, बिल्कुल है. Do you understand? बहुत ही सिंपल सा शब्द है, पार्क लैंडस्केप. ठीक है. अच्छा, in this forest I said no tiger, I said no leopard or lion. Why? क्यों नहीं था इस फॉरेस्ट में? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नो टाइगर नो लायन. यस, व्हाई नॉट? क्यों नहीं है सर? बिकॉज देयर आर नो हर्बीवोर्स. खाना कहां से खाएंगे? There are no herbivores, so why not? There is no grass. Grass is also called undergrowth. Sir, why grass is not there? Because there is no sunlight. Do you remember this? ऐसा मैंने बताया था. Do you remember this? नहीं, डेंस तो है, डेंस से कुछ नहीं होता. डेंस में जानवर रह लेगा, जानवर को क्या दिक्कत है? इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैन यू सी 1 tier 2 tier 3 tier? इंडिया में होता है ना. इंडिया में टाइगर मिलता है जिम कॉर्बेट में. नो ग्लास, ग्रास समझो इसको. तो इट इज सो डार्क. किसकी बात हो रही? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ब्राजील के फॉरेस्ट की, ब्राजील के सेल्वास की बात हो रही. इन ब्राजील देयर इज नथिंग. गेट दैट? नाउ टेल मी एवरीवन, आउट ऑफ एक्स एंड वाई, वेयर कैन आई फाइंड herbivores and carnivores? Big herbivores and big carnivores. Big herbivores and big carnivores. A, X and Y. Where do you think big herbivores and big carnivores will be there? यहां पर होगा सर. सर यहां पे डियर भी बहुत होंगे, यहां पे जेब्रा भी होगा, यहां पे टाइगर भी होगा, यहां पे लायन भी होगा, एलिफेंट भी होगा, भालू भी होगा. दे ऑल विल बी देयर. अगर ये है तो सर यहां शिकारी भी होगा. शिकारी मीन्स हंटर. Do you know that in Africa, African savanna, they are called big game country. पूछा है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, पूछा है which area is called big game country? Big game country का मतलब कहां पर आप शिकार करने जाते हो. अभी भी शिकार किया जाता है, दो नाउ कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव कम. सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. वेरी सिंपल लॉजिक. इसको हम बोलते हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपने मेमोराइज तो कर लिया. यू मेमोराइज व्हाट इज सवाना, व्हाट इज लानोस, व्हाट इज कंपोज, बट यू डू नॉट नो व्हाई डू वी कॉल देम बिग गेम कंट्री. यू डू नॉट नो व्हाट इज पार्क लैंडस्केप. किसी ने मुझे कहा सर पार्क लैंडस्केप यहां पर होता है, इस कॉन्टिनेंट में होता है, यहां पर इस देश में होता है. मैंने कहा भाई सब जगह होगा. यस और नो? डू वी गेट दैट? somebody says कि सर इन ब्राजील वी हैव जैगुआर. तो जैगुआर तो मुझे नहीं पता, हाँ बिल्ली जरूर होती, प्यूमा. तो आप देखेंगे कि जनरली यू विल नॉट हैव छोटू एनिमल्स, बट एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज आर देयर. तो कभी कभी इफ यू हैव वॉच दैट नेशनल ज्योग्राफिक वीडियो, यू विल फाइंड अ फॉरेस्ट वेयर देयर आर मंकीज एवरीवेयर. मंकी की आवाज आती है, तो यहां पे मंकी मिल जाएगा खूब. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मंकी एंड यू विल फाइंड अ प्यूमा. प्यूमा इज अ कैट, प्यूमा, कुगर, ये सब मिल जाएंगे. ये क्या होते हैं? ये
टाइगर फैमिली के, बट किस पर रहते हैं? पेड़ पर रहते हैं, तो पेड़ पर रहेंगे, छोटा मोटा शिकार कर लेंगे. डू यू गेट दैट? So there is a logic. What question you are asking is absolutely valid. So that's there. Is everyone okay? तो ये जितने भी हुए, प्यूमा हुआ, लेपर्ड हुआ, जो पेड़ पर चढ़ सकते हैं, वो थोड़े बहुत पाए जाएंगे. Is everyone okay? हाँ जी, क्लाइंबर्स तो यहां पर थे. बिग गेम कंट्री सबको समझ में आ गया. ट्रॉपिकल. अच्छा, आई हैव वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग. आई हैव, प्लीज पे अटेंशन टू दिस. आई हैव सेमी एरिड एरियाज. आई हैव सेमी एरिड एरियाज in cool region also. Cool region is what? 30 to 60 degree latitude. North and 30 degree south to 60 degree south. ये कौन सा होता है? कूल होता है, रिमेंबर. इसमें भी तो सेमी एरिड हो सकता है. तो सेमी एरिड will make it what? Trees cannot survive. What will come? Grassland. Do we get that? Grassland will come. Which grassland? Temperate grass. Do you understand the difference between temperate grassland and tropical grassland? Temperate grassland and tropical grassland दो जगह पर है. दोनों जगह पर घास होती है. Both place will have grasses. Both place will have grasses. What will be the difference of the grass? What will be the difference of the grass? Everyone, in both cases there is a moisture shortage. Yes or no? Moisture shortage की वजह से, because moisture is, and I hope you are jotting everything. These are jottings. Slide में सब मिल भी जाएगा. Slide में I'll give you in writing also. Don't worry. The height will be low of grassland. बेटा grass तो छोटी होती है. Grass छोटी होती है. Trees यहाँ पर छोटे. Trees have become lower in height. अभी grass की बात कर. ठीक है, अभी ग्रास की बात करें. everyone, I have read that this grass is not very nutritious, and this grass is nutritious. And if I was a buffalo, अगर मैं भैंस होता, if I was a cow, अगर मैं गाय होता, if I was a grass eating animal, I would be smiling here. But if I was here, I will be sad buffalo. तो मैं दुखी भैंस होता. Can you guess why? Why would the tropical grassland have grass which is less nutritious? Logic. Erosion, leaching. Simple यार. एक बात बताओ. Which season I reduce your water supply, you will be distressed? Summer season or winter season? एक सीजन में मैं आपका पानी कम कर देता हूं. Where will you feel the pinch more? Summer season or winter season? इसकी सिचुएशन ज्यादा बुरी है. लीचिंग तो होगा ही नहीं बच्चों. ये सारे सेमी एरिड एरिया, ऑल द पीपल हु आर सेइंग लीचिंग, बेटा यू हैव एन एरर ऑफ लिंकेज. ये प्रोसेसिंग का एरर है. समबडी आस्क्ड व्हाट इज प्रोसेसिंग. बच्चे लीचिंग हमेशा ह्यूमिड एरिया में होता है. ये तो कौन से एरिया है? तो कैल्सिफिकेशन के एरियाज हैं. डू नॉट डू दैट. ये देखो सर, बिकॉज ऑफ लीचिंग गलत कर रहे हो प्रोसेसिंग. डू यू गेट दैट? व्हाई पीपल मेक मिस्टेक्स इन प्रीलिम्स आफ्टर इवन नोइंग दैट. रूल बताया ना, लीचिंग कहां पर होगा? ह्यूमिड एरियाज में. ये तो सेमी एरिड है बच्चों. कैसे कर रहे हो लीचिंग? सेमी एरिड एंड एरिड में तो कैल्सिफिकेशन होता है. डोंट डू दैट. अच्छा, सिंपल आइडिया. वेरी सिंपल आइडिया दैट दिस वन इज फेसिंग मोर स्ट्रेस. पहले तो पानी नहीं, ऊपर से गर्मी बहुत पड़ती है और प्यास लगेगी. यस नो. एंड इधर क्या होगा? इधर पानी नहीं है बट सर्दी भी है, उतनी डिमांड नहीं. तो नाउ डेज रमजान में लाइक बॉयज एंड गर्ल्स फैमिलीज आर कीपिंग रोजास. नवरात्र में भी हम उपवास रख रहे थे. यस नो. तो नवरात्र में उपवास में फलाहार कर सकते हैं. यू कैन टेक फ्रूट्स. बट व्हेन इट कम्स टू रमजान रोजा, पानी भी नहीं होगा थ्रू आउट द डे. तो टेल मी, we are approaching summers. So will that Ramzan roza will be very difficult when it is hot day compared to a day when rain happens and everything is cool. Compared to that, I'm not saying that roza is easy to keep. वो आसान नहीं होता है. कुछ पानी नहीं लेना the whole day, सहरी के बाद और शाम को इफ्तारी तक नहीं लेना है. चैलेंज होगा या नहीं होगा? Just think about it. तो कौन सी घास, which घास will be dry? Which घास इतना सूख कर तिनका हो जाएगा, will become woody. एकदम सूख के तिनका हो जाएगी एंड विल बी हार्ड टू ईट. चबाना भी मुश्किल है. एंड विच ग्रास वुड बी ग्रीन, सॉफ्ट. ग्रीन भी होगी, सॉफ्ट भी होगी एंड इजी टू चू. कौन सी होगी? अब आप समझ सकते हैं मैं भैंसी बनकर क्यों ये वाला पसंद करूंगा. वाई एज अ बफेलो आई लाइक दिस. ठीक है. और यहाँ के जो एरियाज हैं, यहाँ की घास, एक सिंपल लॉजिक है. किसी ने कहा सर घास छोटी क्यों होती है? अरे एक बात बताइए, वाई इज ट्री टॉल? बिकॉज उसके पास वुड होता है. ट्री में क्या होता है? वुड होता है. वुड इज द सपोर्टिंग थिंग. यस और नो. घास में तो कुछ होता ही नहीं. घास ऊपर उगेगी, अपने वजन से झूल जाएगी. यस और नो. तो ग्रास ऐसे आती है, ग्रास ऐसे उग रही है. दिस इज ग्रास. और लंबी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अपने वजन से झूल जाएगी. ऐसे ही होता है ना ग्रास. ट्रू और नॉट? तो घास उगती क्यों नहीं है? उगेगी. विच ग्रास कैन ग्रो? सपोज दिस ग्रास इज ड्राई. इसको ड्राई कर देते हैं तो ये ड्राई में क्या हो जाएगा? तिनका टाइप ग्रो करेगी कि नहीं? तो दिस ग्रास, यहां की ग्रास कैसी होती है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की ग्रास इज लाइक दिस. इसमें तिनका होता है बहुत. और ये वाली ग्रास कैसी होती है? सॉफ्ट ग्रास. इज एवरीवन ओके? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. इज एवरीवन ओके? ये पूरा इरेज होने वाला है. दिस स्क्रीन विल गो. आई होप यू हैव रिटन इट.
कोई कह रहा है क्रीपर, क्रीपर क्या होता है? पेड़ पे चलने वाली लताएं और बेल। यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है नहीं है, यहाँ पे छोटे मोटे पेड़ है। आपको ये भी बता दूं, इनमें सब कुछ फेवरेबल है, तो यहाँ सिर्फ ग्रास होती है, ट्रीलेस ग्रासलैंड, ट्रीलेस होते हैं, इनमें ट्रीज है ही नहीं, नो ट्रीज इन दिस, ग्रास 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 ग्रास। इज एवरीवन ओके? 30 से 60 लैटिट्यूड में तो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। व्हाट मेक्स टेम्परेट ग्रासलैंड डिफरेंट? बेटा ऐसी बात मत करो शुभम राणा। एवरीवन डू यू सी द प्रोसेसिंग एरर? एवरीवन डू यू सी द प्रोसेसिंग एरर? मैंने इसीलिए बोला लोग प्रीलिम्स और मेंस क्यों फेल करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं, इसलिए करते हैं। एंड एवरीवन ऑनेस्टली टेल मी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, पीडीएफ्स, घटना चक्र, ये सब किसके लिए हैं? सब किस पे फोकस देते हैं? 99% ऑफ द स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस। यस और नो? उनको इसी का डर लगता रहता है, इसी का फियर है। एंड हु क्लियर दिस एग्जाम? 1% से भी कम लोग इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। ट्रू और नॉट? इज एवरीवन ओके? तो यहीं पर लगे रहेंगे, यहीं पर लगे रहेंगे। ये रटा हुआ है, रटा हुआ और रट रहा है और रट रहा है, प्रोसेसिंग में फेल हो जाएंगे। अभी एक एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अ गुड एग्जांपल व्हिच हैज कम जस्ट नाउ। समबडी सेड temperate area, temperate latitudes 30 to 60 have forest. Where did the grassland come from? Who told you this there? Who told you this? I did not tell it. I told you something yesterday. ऐसे मैंने बॉक्स बनाया था, if you remember. I said 10, I said 30, I said 45 and I said 60. Yes or no? फिर मैंने क्या किया था? इनको डिवाइड किया था। फिर मैंने कहा यहां पर फॉरेस्ट है, यहां पर फॉरेस्ट है, यहां पर फॉरेस्ट है, यहां पर फॉरेस्ट है, यहां फॉरेस्ट। ठीक है, इसको हमने ब्रिटिश टाइप कहा, ब्रिटिश। इसको यहां भी हमने फॉरेस्ट लिखा था, टाइगर। ट्रू और नॉट? डिड आई नॉट से कि यहां पर ग्रास होगी, ग्रास, और यहां पर भी ग्रास होगी। ये 30 to 60 में आता है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, और ये क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। डू यू सी द प्रोसेसिंग एरर? डू यू सी द प्रोसेसिंग एरर? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, तो 30 to 60 तो होता है, 30 to 60 में बहुत सारी चीजें होती है बच्चों। यहां पर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होता है, यहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड होता है। एंड आई टोल्ड यू हमेशा मिडिल में आकर सेमी एरिड होगा, सेमी एरिड। डू यू रिमेंबर? मिडिल में आके हवा यहां तक पहुंचेगी नहीं, अगर यहां से भी आ रही है तो भी सेमी एरिड है, इधर से आ रही है तो भी सेमी एरिड है। सिंपल कॉन्सेप्ट। होगा क्या? वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट देम, एंड व्हेन वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट देम, डिस्पाइट ऑल द मेहनत, डिस्पाइट